वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी एंड टॉप स्टॉक्स। और स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट ऑफ निफ्टी के साथ। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट इट एक्चुअली ओपनड एट 17,399 और ऑलमोस्ट 17,400 पे ही ओपन हो गया बोल सकते हैं। एंड इट मेड अ हाई ऑफ 17,429, सो 400 लेवल्स वर टेस्टेड बट क्लियरली काफ़ी नीचे आ गया है। सो फ्रॉम द हाइज इट सॉ अराउंड 100 और सो पॉइंट फॉल, और अभी क्लोज किया है अराउंड 55 पॉइंट्स बिलो द हाई। सो आई थिंक दैट्स अ प्रिटी साइजेबल नंबर ओवरऑल। मतलब डे का जो रेंज था 100 पॉइंट का, उससे आधा नीचे आके क्लोज किया है, तो मेरे हिसाब से तो इट इज डेफिनेटली अ नंबर। एंड ऑन एन ईओडी बेसिस व्हाट वी कैन सी इज इट्स अ डोजी, और अदर इट्स अ स्पिनिंग टॉप। डोजी तो नहीं है, स्पिनिंग टॉप है, मतलब ऐसे है। एंड इसका इसका पॉइंट क्या है दैट इफ वी सी, in the past, the last time that we saw spinning top, okay, the market was actually 1,000 points down. Right here is when the last time we saw spinning top or a doji was. उससे 1,000 पॉइंट ऊपर गया है। अभी वो कब हुआ था कि समझो यहाँ पे ये वाला हम लोग ने अगर स्पिनिंग टॉप डोजी ले लिया, तो इसके हाई के ऊपर ये वाले जो कैंडल है उसने जब ब्रेकआउट दिया, दैट इज व्हेन वी सॉ अ गुड मूव। एंड देन दिस कैंडल रीटेस्टेड दैट लेवल, एंड आफ्टर दैट वी सॉ एन इवन बेटर मूव। राइट, सो इन दिस केस नाउ मेरा क्या व्यू है दैट इफ अबव दिस हाई, मतलब 430 के ऊपर अगर जाता है, then it has chance. So it possibly it might go like this or something, then it has chance. बट अगर आज के लो के नीचे होल्ड करता है, गैप फिल करके भी स्लो डाउन नहीं होता, then possibly we might be looking into a few days of sideways movement और थोड़ा सा minor profit booking और कुछ हो सकता है। Again, market is very clearly bullish. I don't think anyone can say that it's not bullish or something. In fact, if we see the recent few days, it has corrected, or rather it has gone up almost like the post COVID recovery. So काफी sharply ऊपर गया है, so you can't say it's bearish, but this is what I feel. If we go to the 60-minute chart, we can see it's relatively flat. ठीक है, relatively flat, but अगर जब हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, that is when we see that even though it was flat, okay, even though it was flat, okay, even Friday was flat actually, right? This was Friday, and today, okay, today इट हैज़ मूव्ड लाइक दिस। ये हाई का जो उसने 400 लेवल्स रिजेक्ट कर लिए, उसके बाद एकदम नैरो रेंज में चला है 400 का रेजिस्टेंस लेके, एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड। सो 400 क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लेट्स सी इफ दैट हैपन्स। नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। Okay, daily chart of Bank Nifty. If I, yeah, you can like, subscribe, comment, and share if you like it. If you dislike it, then you can let me know that also. You're free to dislike the videos as well. But now coming to Bank Nifty. Bank Nifty में 36,592 का closing है, which is I feel pretty decent thing all things considered, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी देखे तो ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ पे ये वाला एक लेवल करके एकदम शार्पली नीचे आया है, और उसके बाद ये लेवल पे वो अटका था, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। सो द वेरी फर्स्ट सपोर्ट दैट वी सी इज 36,455. सो आई विल जस्ट मेंशन दैट 36,455, राइट, विच इज योर। सो यहाँ पे ऐसे करके शायद जा सकता है। अगर ये तोड़ता है, देन द नेक्स्ट लेवल आई बी लुकिंग एट इज 35,800, क्योंकि ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सो दीज आर द टू लेवल्स दैट आई वुड बी लुकिंग आउट फॉर बैंक निफ्टी। बट ओवरऑल सेलिंग प्रेशर दिख तो ज़रूर रहा है। और अगर हम लोग 60 मिनट चार्ट करते हैं, वी कैन एक्चुअली सी दैट द प्रीवियस क्लोज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, वेर एज इट वॉज निफ्टी वॉज अबव प्रीवियस क्लोज। सो वो देख सकते हैं, एक चीज़ बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन जैसा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। नाउ कमिंग टू द टॉप स्टॉक्स। ओके, टॉप स्टॉक्स पे आते हैं हम लोग रिलायंस के साथ। एंड रिलायंस में व्हाट वी कैन सी इज इट्स लाइक एन इन्वर्टेड हैमर, इनवर्स हैमर। और आज का हाई बनाया था 2480। जनरली रिलायंस में 20, 60, 50, 80 लेवल्स जो जो रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव सीन प्राइस टर्निंग बैक फ्रॉम दोज लेवल्स। आज भी वैसा ही हुआ, 2480 पे सेलिंग आ गया, और हम लोग ऐसा सेलिंग प्रेशर टाइप का कैंडल देख रहे हैं। नाउ if you ask me what's the next sort of thing possible for Reliance, I'd say that gap filling can't really be ruled out, right? 2400 भी रिटेस्ट कर लेगा अगर कल स्ट्रेंथ नहीं है तो। अगर कल स्ट्रेंथ है,
ठीक है, नेचुरली ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जाएगा मुझे भी नहीं पता, बट येस, एटलीस्ट फॉर निफ्टी एंड इवन फॉर रिलायंस एंड अदर टॉप स्टॉक्स आई हैव सीन अ डे लाइक दिस। ठीक है, एक दिन ऐसा जाता है, दूसरे दिन सीधा ऐसा। इनफैक्ट इवन ऑन द डाउन साइड, ओके, वी हैव सीन कैंडल्स लाइक दिस, ये नीचे आ रहा है प्राइस, ऐसा हम लोग को हैमर कैंडल दिया, नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज लाइक दिस, right? We have seen these things happening, so I would say it's important to be a little cautious and a little careful with reliance these days, especially now. और हंसने की बात क्या है, पॉसिबली लोगों को प्रॉफिट बुकिंग इसलिए लगा होगा बिकॉज जस्ट सम टाइम बैक, राइट, सम टाइम बैक राइट हियर, दिस इज व्हेन बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन था, दिस इज ऑल्सो व्हेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बिकॉज रिलायंस वाज जस्ट गोइंग साइडवेज टू नेगेटिव, राइट, यही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा था रिलायंस। जब ये ब्रेकआउट देके ऊपर आया है, दैट इज व्हेन इट्स रियली स्टार्टेड टू कैच अप, एंड पॉसिबली सम पीपल माइट थिंक कि इतना ऊपर आया है अचानक से, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाई इट माइट हैव कम डाउन बाय लिटिल। सो दैट्स माय व्यू। Overall, though, it's undeniable that it's bullish. As I don't think anyone can say that it's bearish right now. But yeah, that's my view right now. So let's see how that goes. Next stock is HDFC Bank. हम लोग देख सकते हैं HDFC Bank में I'll just enable the moving averages as well. And what we can see is it's above the moving average. But the level I'm very curious for is 1560 and 1550. ये दो जो levels है, okay, हम लोग बहुत important है, कैसे देख सकते हैं? This is one area where they turned back from, and then this right here, okay, this zone right here, it will be like a retest of this resistance, retest of the breakout zone. So that is also a level that I'm looking out for, 1550 1560। देखते हैं कैसा चलता है, RSI 60 पे है, तो दोनों का शायद एक कॉन्फ्लुएंस जैसा ट्रेड भी बन सकता है, आई वुड नॉट रूल दैट आउट। Next stock is Infosys. Infosys is up by quite a lot, right? If you recall, this is somewhere around here. I had exited part of my quantity, a little less than 30% quantity, क्योंकि मेरे को लगा कि there is a good chance it can come down also. I'm glad that I did because I still have most of my quantity, majority of my quantity that's still running in profits. So I'm letting the profits run. And next stop for Infosys appears to be 1744. 20 हमें तोड़ा है, 20 हमें as we know is a very important level. जनरली ट्रेंड फॉलो करते हैं तभी 20 के आसपास से इट डज टेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ बुलिश और अ बेरिश ट्रेंड। तो देखते हैं कैसा चलता है। 1744 इज जस्ट 15 पॉइंट्स अवे, सो परहैप्स इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि वो लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। एक और चीज़, ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू RSI, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू RSI। RSI में what did we see here, that at 1744 RSI was at 80, now at 1725, which is just a few points away from 1744, RSI is just crossing 60। जब ये साइडवेज जाता है, जब ये नीचे जाता है, राइट, साइडवेज और नीचे, तभी RSI gets a little breather। as a result of that, right, as a result of that, we do see it appearing to be not overbought or oversold, but that's what these retracements are for. So that's why it's, I think, important to understand how RSI plays in the picture with price। ठीक है, that's my view on Infosys। Next stock is HDFC। HDFC 2770 का जो resistance है, that's working right now, and if we see here, it's almost like a pennant, like a flag pattern and a pennant and all confirmed, confirmed नहीं but combined। okay, so पहला मेरे को ये दिखा, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, साइडवेज जाके ब्रेकआउट दिया और अभी ऐसा है। so let's see, it's almost forming like those triangles of sorts, the most visible one being this one, राइट। सो अगर ये तोड़ता है 1570 के ऊपर, देन आई थिंक इट डज हैव अ शॉट at retesting the ATH levels। So let's see how that goes। Okay, 2770 is the important level। The next stock we're talking about is ICICI Bank। 1715 is the support right now, तो थोड़ा सेलिंग हो रहा है 720 के ऊपर, but let's see how that goes as well। No strong view as such on ICICI Bank, मैंने levels पहले ही बता दिए हैं। So first level I'd be looking out is this, because ये वाला जो previous all time high के आसपास का जो level है, that is right there, right, 1715 से 1719 तक। So possibly उधर एक base जैसा form करके ऊपर या नीचे जा सकता है। Next stock is Kotak Bank। Kotak Bank 1800 के ऊपर open हुआ था, but then it actually came down। We saw some selling happening। This combined with HDFC Bank underperforming might just be the reason why Bank Nifty was down
and obviously Nifty was also it wasn't able to really close that decisively. सो वो दोनों का रीज़न हो सकता है. अभी 1820 के आसपास आ रहा है, 1820 के आसपास आ रहा है. दैट माइट बी द रीज़न वाई it's starting to face some resistance, because we can see this level has been very important, right? Here also it's approaching that level. That's what's happening, and 200 MA is also there. So all things considered, it's at that level now. In terms of supports, gap fill kiya hai, which is a good sign. But let's see if that's held. Overall 1760 is a good level. So देखते हैं कैसा चलता है. Next stock we're looking at is SBI. SBI 50 की MA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, बट जो 435 का लेवल है, ठीक है, 435 का जो लेवल है, I'll extend this line so we can see it clearer. My touchpad skills aren't the best, but still I'll try. ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाले लाइन के आसपास ही है अभी. ये वाला लाइन रेजिस्टेंस दे रहा है. सो अगर ये तोड़ता है, देन आई थिंक 440 450 इज नॉट कैनॉट बी रूल्ड आउट. बट लेट्स सी व्हेन और इफ दैट हैपेंस. नेक्स्ट स्टॉक इफ तो होगा ही, मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन. नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक 800 को होल्ड किया है. इट्स अ परफेक्ट डोजी. ओपन एट 800.85, क्लोज्ड एट 800.8. और वही इनसाइड बार जैसा दिया है इसने, तो एक्सिस बैंक में भी थोड़ा वैसा इंडिसाइसिवनेस जैसा चल रहा है. लेट्स सी हाउ दैट गोज. ओवरऑल मोमेंटम इज देयर, बट पॉसिबली यहाँ पे 795 के आसपास एक बेस जैसा बना के शायद फिर ऊपर जाएगा, और मे बी इट विल जस्ट कम डाउन 780ish level. So let's see how that goes. In terms of our swing trades that we had identified, rather I had identified over the weekend, कल ही वीडियो गया था. Raymond is up a little. Oil India is down 2%, but the rest of them are up down थोड़ा ऊपर नीचे ही है mostly. I think Bajaj Auto is also up a little. So that's what the market is looking like. Let me know what you feel. Curious to hear your thoughts. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.